अच्छा, एबे आमे देखिबा जियोग्राफी ऑफ ओडिशा। अच्छा, टिके सर्टकट रे देखिदबा हम जियोग्राफी ऑफ ओडिशा देखिला पूर्वरु कि एबे ओडिशा कोठी कोण लाए करूची। टिके टेक्निकल आइडिया जेमति कि तमे जदि पूरा ग्लोब को देखिबो, पूरा ग्लोब रे तमे जानिथिबो हमर गोटे इक्वेटर अछि, गोटे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अछि, गोटे कैप्रिकॉर्न अछि, आ किछि लैटिट्यूडनल लाइन्स अछि जे कि हम इंडिया को किछि टाइम जोन्स रे डिवाइड करिकि रखिछि। से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डिसाइड करके हमें लोकेशन जानती। ये लोकेशन पाई तमरो कौन काम करे, जीपीएस काम करे। जीपीएस साइड रे तमरो जोटा यूएस रो कहबो सैटेलाइट तार प्राय 30टा सैटेलाइट लागि तमे जो टाइम रे मारिबो 4टा सैटेलाइट एक्टिवेट हुअन्ति। तमरो मेन पोजीशन से माने 4टा जानकर कॉमन पॉइंट देखिके तमे तम लोकेशन प्रॉपर्ली पाई जाओ। दैट इज डिटेल जियोग्राफी। अच्छा, बट आमे टोटल ये तो तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो पार्ट, जीपीएस भी तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो पार्ट। लोकेशन जेमति कि तुम जानलो तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रो हमें लोकेशन जानि गले। बट हमर अबे इंडिया कोठी अछि, इंडिया तमर एठी अछि। तुम कहि परिबो इंडिया तम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखि इंडिया रो 8टा स्टेट देखि तम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करछि। हमर ओडिशा जस्ट ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिके तळको लाए करूछि। अच्छा, तो एटा जदि हम इंडिया हुए, एटा जदि हमर इंडिया हुए, चलो। अच्छा, हमर ओडिशा एठी लाए करूची। तमर एठी जाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो तुम जदि कहि पारिबो तुम इंडिया टोटल लाए करूची नॉर्थ ईस्ट रे। एपटा नॉर्थ, एपटा ईस्ट, एपटे हमर जाय कि तमर ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर। एटा तमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहिला माने हम इंडिया टोटल नॉर्थ ईस्ट रे लाए करची। तमर मीन आईटीसी तमर एठी 8 5.5 घंटा दूर रे तमर मीन टेम्परेचर माने हमर आईएसटी जे कि तमर मिर्जापुर दे के हमर एठी क्रॉस करिछि। आगुर एटा उज्जैन दे के जाउथला, एबे हमर मिर्जापुर दे के क्रॉस करछि। तमर एठु तमर माने हम कहि परिबो कि तमर जो टाइम जोन हमर ओडिशा दे के हमर आईएसटी भी करछि क्रॉस हला। तो यही ओडिशा आज आम देखा लोकेशन जियोग्राफी को रिवर अच्छा कौटी कौटी माउंटेन अच्छी तार कौन कौन जियोग्राफी ये गोटे वीडियो आम टोटाल आज ओडिशा जियोग्राफी यही बही कंप्लीट करदे टोटाल रिविजन। अच्छा, तो से सब जिन तार सब लिखी तार लोकेशन विषय कि ओडिशा कोटी अच्छी इट इज तुम कहीपर 17 डिग्री माने 49 मिनिट नॉर्थ टू 22 डिग्री 34 नॉर्थ जाए। माने ये कौन है तुम तुम एटा तुम जो कैलकुलेशन हो नॉर्थ नॉर्थ वाइज एटा तुम आम एत नंबर लाटिट्यूड रु एत नंबर लंगिट्यूड जाए लंबिकी अच्छा। कारण जो देखो लिखाई थी नॉर्थ नॉर्थ माने ये सब जिन एमती जाऊँगा माने आम इंडिया जब एठी अच्छी ना माने आम जो ओडिशा को तुम नॉर्थ नॉर्थ एटा केमती है ओडिशा को आम ये देखा तर ओडिशा आमर ये अच्छी जो जगटा को जो जूम कली ओडिशा ये अच्छी ना तो देखो एठू गोटे लाटिट्यूडल लाइन जाइए एठू गोटे लाटिट्यूडल लाइन जाइए तो एठू लाटिट्यूडल लाइन 17 टू नहीं 22 जाए। ओके, तो एठू अच्छी आ तुम 81 टू नहीं कि तुम ये जाए तुम लंगिट्यूडनल वेरिएशन अच्छी। ओके, एमती ओके एठू नहीं कि एतिक जाए। देन तार कैपिटल हूँ भुवनेश्वर एक्सटेंडेड 155 कन्स्टिट्यूटेड 4.3% ऑफ द टोटल इंडिया एंड ओडिशा has a coastline of 450 kilometer from the Inchapura in the south to the Subarnarekha in the northeast. It is a walked out for Brahmagiri on Chilika Lake in the southwest to the Chandvali in the northeast. It is the ninth largest state in the India in terms of the area and 11 in the population. Population ने 11 और तुम्हारा largest रे 9 number state अच्छी किए हम ओडिशा। देन आंक बाउंड्री विषय आम जदि देखा ओडिशार ओडिशा आमर 29टा स्टेट भितर तुम गोटे स्टेट है किए ओडिशा। ओडिशार ईस्टर्न कोस्ट कोस्ट अच्छी तार ईस्टर्न ने कारण तो ईस्टर्न में जानते हो कि ना एंड ओडिशा सराउंडेड बाय झारखंड। झारखंड तार नॉर्थ रे रहा। वेस्ट बेंगल भी से नॉर्थ ईस्ट आड़ रहा। नॉर्थ ईस्ट आड़ को तुम कौन रहा वेस्ट बेंगल। देन तुम बे ऑफ बेंगल इन द ईस्ट टोटाल ईस्ट तुम बे ऑफ बेंगल जोटा कि तुम कोस्ट मु कहली बे ऑफ बेंगल तुम टोटाली
ଆଚ୍ଛା ତମର ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରହିଗଲା ସାଉଥକୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ଛତିଶଗଡ଼ ଟୁ ଦି ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଛତିଶଗଡ଼ ତାର ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟକୁ ପୁରା ଏମିତି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି ରହିଗଲା। ତ ତାରି ଭିତରେ ଆମର କିଏ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା। ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ତାର ଟିକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କେଉଁ କେଉଁଠି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତୁମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ଛତିଶଗଡ଼, ଏପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହିଲା, ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରହିଲା, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଲା, ଏପଟେ ତୁମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇନ୍ ଦେଖିଲ। ଏପଟୁ ଯଦି ଆମେ ତଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏପଟେ ତୁମର ମାଲକାନଗିରି, ପୁରା ତଳକୁ ଦେଖିବ ମାଲକାନଗିରି। ତାପରେ ତୁମର ଏଠି ଅଛି କିଏ? କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଦେନ୍ ତୁମର ରାୟଗଡ଼ା। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟି ନେମ୍ ସବୁ। ଏଠି ତୁମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଛି, ଏଠି ତୁମର ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି, ଦେନ୍ ତୁମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ତୁମର ବାରିପଦା, ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେନ୍ ତୁମର ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଛତ୍ରପୁର, ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଛତିଶଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର। ତ ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆର ଖାଲି ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମନେ ରଖ କି କେଉଁଠି କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଗଲା ତୁମର। ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଏପଟେ ରହିଗଲ ତୁମର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଏପଟେ ତୁମର ପୁରୀ, ଛତିଶଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦି ତୁମେ ଯିବ ତୁମେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ତୁମେ ପାଇଯିବ। ଦେନ୍ ତୁମର ଏପଟେ ଯଦି ଆସିଲା ଆମ କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଏପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏପଟେ ତୁମର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ତୁମେ ରିଭାଇଜ୍ ଟିକେ କରିଦେବ କେଉଁଠି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେନ୍ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆର ଇଷ୍ଟରେ ତାର କୋଷ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଦେନ୍ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜନ୍। ତା ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ମାଉଣ୍ଟେନିୟସ୍, ସରି ଏଟା ନୁହଁ, କଲର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାପରେ ତା ମିଡ଼ିଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମର ଏମିତି ମାଉଣ୍ଟେନିୟସ୍ ରିଜନ୍। ଆରେ ଇଏ କିଏ? ହଁ, ତ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଏମିତି ତୁମର ମାଉଣ୍ଟେନିୟସ୍ ରିଜନ୍ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମର କୋଷ୍ଟାଲ ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ତୁମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଦେନ୍ ତୁମର ଏଇଟା ଖାଲି ଆମେ ରଫ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରୁଛେ। ଦେନ୍ ତୁମର କିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଏଠି ଆସିଗଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ତୁମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋଲିଂ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଦେନ୍ କିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋଲିଂ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆସିଗଲା, କିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋଲିଂ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ତୁମର ରିଭର ଭ୍ୟାଲିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ। ତ ରିଭର ଭ୍ୟାଲିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଦେ ଆର୍ ଦି ରିଭର ଭ୍ୟାଲିଜ୍ ଆଉ କିଛି ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍। ଓକେ, ଯେଉଁଠି ତୁମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଭିଜ୍ ବି ହେଇଯାଏ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ବି ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ସେ ସବୁ ତୁମର ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ପାର୍ଟ। ଛାଡ଼, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ତୁମର କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ଅଛି? These plains are the depositional landform of recent origin and geological belongs to the post tertiary period। ତ ତୁମର ଯଦି ଟର୍ସିଆରୀ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲ, ଯଦି ତୁମେ ଏଠି ପୁରା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲେଖିବ, ତୁମର ଏପଟେ ରହିଲା କିଏ? ହାଡ଼ିଆନ୍, ଏପଟେ ଆର୍କିଆନ୍, ଏପଟେ ପ୍ରୋଟେରୋଜୋଇକ୍, ଏପଟେ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆନ୍, ଏପଟେ ତୁମର ଅର୍ଡୋଭିସିଆନ୍, ସିଲୁରିଆନ୍, ଡେଭୋନିଆନ୍, କାର୍ବୋନିଫେରସ୍, ପର୍ମିଆନ୍, ତୁମର ଟ୍ରାଏସିକ୍, ସରି ତୁମର ଟ୍ରାଇସିକ୍, ଜୁରାସିକ୍, କ୍ରିଟାସିୟସ୍। ତାପରେ ତୁମର ଏପଟେ ଆସିଗଲା କିଏ? ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ମିଓସିନ୍, ନିଓସିନ୍, ଅଲିଗୋସିନ୍ ଏସବୁ ଆସି ତୁମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ କିଏ? ଟର୍ସିଆରୀ। ତ ସେ ଟର୍ସିଆରୀରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଟର୍ସିଆରୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଠି ସବୁ ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଦି କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟ୍ରେଚେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର in the north east to the Rusukulia river in the south west। ଓକେ, ଦେଖ ତୁମର ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏଠି? ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟ୍ରେଚେନ୍ ଅନ୍ ଦି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର, ଫ୍ରମ୍ ଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ତ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଆମେ ପାଇଯିବା କିଏ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର। ଏପଟେ ଆସିବ କିଏ? ତୁମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର ଇନ୍ ଦ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ, ଇନ୍ ଦ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ।
Then the 75-meter outline determine the western boundary of these plains and differentiate there from the middle mountainous regions. This region is very fertile and it's known for the rice bowl of the India. तो ये तुम से जो राइस बाउल ऑफ दी ओडिशा बोली आपको कहा जाए. ओके, तो दिस प्लेन इज नैरो इन द नॉर्थ एंड वाइडेस्ट इन द मिडिल. ये जो तुम प्लेनटा किए तुम कोस्टल प्लेन इट इज वाइडेस्ट इन द मिडिल एंड नैरोएस्ट इन द चिलिका कोस्ट. चिलिका कोस्ट पाखे तार विथ टिके नैरो हो जाए ना तार विथ तार केम थाए नैरो थाए तार मिडिल. And the coastal plain of the Odisha are called as the hexadeltic region. They are called as the hexadeltic region. The Asivo, they are called as the hexadeltic region or the gift of 6 rivers. These rivers are the Subarnarekha, Budhabalanga, Baitarani, Brahmani, Mahanadi, Rusikulya. तो ताको हमें देखिबा कोठी कोन के अछि. तापर सेकेंड आसला कि आमर नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन जोटा तुम बालेश्वर प्लेन बोली कह. इन द ओस्ट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग द फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास एट द सुवर्णरेखा रिवर एंड द बुढ़ाबालांग रिवर अप टू बैतरणी रिवर. ये तुम कौन हुए ना ये बेसी भी माने ये तुम कौन हुए कहल जी सुवर्णरेखा रिवर और बुढ़ाबालांग रिवर पूरा ये फ्लड प्लेन सब अच्छी आ डेल्टास गुड़ा सब माने अच्छी. तो जगह तुम टिके फर्टाइल. तो मिडिल कोस्ट जोटा कि तुम कटक पूरी कोस्टल प्लेन आसो इट इज लाइट बिटवीन दि नॉर्थ कोस्टल प्लेन एंड साउथ कोस्टल प्लेन ऑफ दि ऋषिकुल्य रिवर. तो ऋषिकुल्य रिवर नॉर्थ कोस्टल प्लेन और साउथ कोस्टल प्लेन भितर तुम किए अच्छा ये तुम मिडिल कोस्टल प्लेन. इट इंक्लूड्स द डेल्टास ऑफ द शालांदी रिवर, बैतरणी रिवर एंड ब्राह्मणी रिवर इन द नॉर्थ एंड द महानदी रिवर इन द साउथ. द महानदी डेल्टा हैज द मैक्सिमम विड्थ. तो तुम जो मिडिल कोस्टल प्लेन तुम अच्छी ए प्लेन में तुम कौ सब रिवर गुड़ा सब ना तुम शालांदी रिवर एपटे बैतरणी रिवर एपटे ब्राह्मणी रिवर इन द नॉर्थ and the Mahanadi river in the south. The Mahanadi delta has the maximum width. Then what is called as the south coastal plain and the Rusikulya plain. Rusikulya plain pakhar kon achi it is composed of a fluvial of the Rusikulya river. It includes the lacustrine plain of the Chilika lake and smaller delta of the Rusikulya river. The southern plain can be further divided into the 3 zones like parallel to the shoreline which are called as the salt tracts, the arable tracts and the soft mountainy tract. तो आमर जो सदर्न कोस्टल प्लेन अच्छे तुम ऋषिकुल्या रिवर पाखे द सदर्न प्लेन कैन बी फर्दर डिवाइडेड हो जाए. देख तुम फास्ट तो आमर गला गोटे नॉर्दर्न प्लेन बालेश्वर जान मिडिल प्लेन कटक पुरी जान ये कौ रिवर अच्छी जान प्राय तुम सुवर्णरेखा बुढ़ाबालांग रिवर पाइज बालेश्वर कटक पुरी आसला बेलू तुम शालांदी रिवर, बैतरणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर तुमको मिल जाव. सदर्न कोस्टल आसला बेलू तुमको ऋषिकुल्या रिवर मिल जाव. पुणी से तुम माने फर्दर 3 टाइप डिवाइड हो. सॉल्ट ट्रैक्ट माने एटा तुम नैरो बेल्ट गोटे अच्छी 4.8 टू 9.6 किलोमीटर तुम ये टाइडल फॉरेस्ट कोस्ट लाइन माने कवर करके अच्छी एंड इट इज सॉल्ट द्वारा फिल्ड हो कंप्लीट डिवॉइड ऑफ द एग्रीकल्चर. प्राय से तुम एग्रीकल्चर हुए ना ड्यू टू द सॉल्ट ट्रैक्ट. से जो तुम इन द महानदी डेल्टा इट कवर्ड विथ द टाइडल फॉरेस्ट. इट ऑल्सो नोन एज द लिटिल सुंदरबन. आपको तुम लिटिल सुंदरबन ना भी ए एरिया तुम जाना पाओ. Arable trust कौन it also known as the rice country which lies in the middle of the plains. The richest part of the whole of the state as far agriculture is concerned. This part also concerned as the levees मान embankments built to prevent water flow of river during high flood. They coverage a large tract of the land which affect the human well life. तो लेविज माने कौन कहले दैट इज कॉल्ड बंध जोटा तुम नेचुरल लेविज बोली कह ताको तुम नदी बंध बोली कह जोटा कि तुम नेचुरल माने नेचर द्वारा होता है. बट तुम जो एबाकमेंट तैयारी कर एबाकमेंट इज द स्मॉलर वर्जन ऑफ डैम. डैम रे जमी तुम बड़ बड़ रिजर्वियर तैयारी करके पानी को सब स्टोर करके रख द टाइप ऑफ द थिंग इट इज कॉल्ड एज द एबाकमेंट. टिके छोट होइथिबो बट तुम ताकर काम तारी भलिया ही. बट दैट इज मैन मेड दैट लेवी इज मैन मेड. ताको भी बंध बोली कहबो बट दैट इज मैन मेड दैट इज नॉट नेचुरल. से जो तुम नेचुरल
लेविज तो फिजिकल जियोग्राफी रे लिखाई थी तो नेचुरल लेविज मीन थिंग एज दी नदी बंध ओके तापर दैट इज द सब माउंटेन ट्रैक्ट इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द प्लेन इट मीटिंग जोन ऑफ द एरेबल ट्रैक्ट the sparse stimulation of the eastern ghat is also known as the zone of the transition. This zone is majorly consisted of the red soil. Low level of the lateritic soil are found in this region, but still soil erosion is very common in this region. The region has natural vegetation from throne to the subthrone. स्टंट ये भाया मॉन्टेनी फॉरेस्ट को सब मॉन्टेन फॉरेस्ट एट तमरा जोन ऑफ ट्रांजिशन थाए कारण इट लाइज टू द वेस्टर्न प्लेन्स इट मीटिंग जोन ऑफ द एरेबल ट्रैक्ट एंड द स्पॉट स्टिमुलेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट कारण तो जानते हो ईस्टर्न घाट तुम जो इंडिया एनलार्ज है तार किसी पार्ट तुम तल आड़ को तुम इंडिया ओडिशा भी पार्ट एतरे अच्छी देन जो मिडिल माउंटेनियस लैंड तुम कौच जहाँ तुम हाईलैंड बोली कौच हाईलैंड सब किए अच्छा दिस रीजन कवर्स अबाउट द 3/4 एरिया ऑफ द एंटायर स्टेट प्राय 3/4 एरिया किए कवर कर मिडिल ईस्ट माउंटेन माने द एलिवेशन ऑफ दिस रीजन रेंजेस फ्रॉम द 610 टू 1068 मीटर एमती ना कि बड़ बड़ पहाड़ सब 610 रु 1068 मीटर जाए मीन सी लेवल या सब अपलिफ्टेड लैंड गुड़ा था इट इज पार्ट ऑफ द पेनिसुलर इंडिया द रीजन मोस्टली एज हिली माउंटेनियस ऑफ ईस्टर्न घाट एंड इट इज रिमार्केबल ऑफ नंबर ऑफ वाटर शेड माने जो गोटे रिवर सब ट्रिब्यूटरी ये आसिक मिसिकी एटा गोटे वाटर शेड गोटे रीजन हो जाए सेठी जो माने तार डिवाइड थाए कि ता पाखरे जदि आउ गोटे एमती ब्रांच जाइथिबो ता मझे भितर वाटर डिवाइड थिबो तो तांकर सेटा को वाटर शेड जोन कहते एंड दिस हिल्स एंड माउंटेन्स देख ये हिल्स एंड माउंटेन्स लिखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिल्स एंड द माउंटेन्स दैट इज मीनिंग माने क्या तुम हिल्स कह क्या माउंटेन कह दैट इज डिपेंड्स अपॉन द हाइट कि तुम गोटा 1000 सेंटीमीटर रु ऊपर को जोड़ा थी तुम माउंटेन बोली कह आ 1000 माने मीटर रु जोड़ा सब कम थी तुम हिल्स बोली कह तो हिल्स इज छोट है तो माउंटेन जोड़ा तुम बड़ देखो माउंटेन बोली कह दैट इज हिल माउंटेन रेंजेस लाइक आंडीज रॉकीज हिमालयस तुम कनेक्ट कर दब एंड दैट इज ईस्टर्न घाट इट इज मार्क्ड बाय द नंबर ऑफ वाटर सेट्स hill and mountains rise abruptly and steeply of eastern and slope gently. So what do you mean by gentle slope? Gentle means what is the difference between the steep and gentle? You have to clear the thing is that vertical means vertical माने मु जदि एठी पूरा vertical ठिया भी मो vertical रु जदि एबे तळ आड़ को जाउची माने मु को होचे एबे मु एबे जेंटिल हे जाउची ओके मु एबे जेंटिल हे जाउची जदि मु ऊपर को जाय कि माने vertical होउची ताले मु आस्ते आस्ते स्टीप हे जाउची तो तमे कहबो कि जो स्लोप टा देखिबो पूरा हॉरिजॉन्टल पाखा पाखी थिबो ताको तमे जेंटिल बोली कहबो जोडा को देखिबो पूरा नैरो थिबो द टाइप ऑफ द थिंग 60 डिग्री 2 प्लस हे कि थिबो ताको तमे स्टीप स्लोप बोली कहबो सेठी पानी पइले हटा माने संगे संग खसीଯିବ द माउंटेन एक्सटेंडेड फ्रॉम द नॉर्दर्न इज फ्रॉम द मयूरभंज टू द नॉर्थ वेस्ट लाइक मालकानगिरी द ईस्टर्न घाट आर इंटरप्टली बाय नंबर ऑफ द बोट एंड नैरो रिवर वैलीज लाइक एंड फॉट प्लेन्स ओके तापर मेजर रिवर सब किए तुम ये अच्छा लाइक बैतरणी ब्राह्मणी महानदी ऋषिकुल्या वंशधारा नागवली along with their tributaries have cut deep and narrow valleys in this region like the morphologically the middle mountainous region is divided into following regions के फास्ट तुम जी सब मिडिल माउंटेनियस रीजन तुम रहा यही जगार आम करदे डिवाइड फास्ट तुम किए सिमिलीपाल आउ तुम मेघसानी माउंटेन सिमिलीपाल आउ तुम मेघसानी माउंटेन दिस आर ऑफ द वोल्कानिक ओरिजिन माउंटेन तो व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग वोल्कानिक ओरिजिन द mountain is origin from the volcano is called as the volcanic origin so what do you mean by volcano that is the morphology having a magma chamber and upwarding vent and a crater and if it is big it is called as a caldera and a magma flow with some pyroclastic materials and some fumaroles that is behind in the past when it is active but now they are dormant so there is no fumaroles but any pyroclastic materials or you can say any lavas that is present here no lavas if it is active there is lavas and the fumaroles but it is dormant and extinct so it have no fumaroles and lavas and the lavas may get solidified into igneous rock that is called from the word igno in छाड़ तो इग्नोरु तुम आसचे कौन इग्नियस रॉक जोटा कि तुम पत्थर सृष्टि तो से भाया तुम वोल्कानिक
ଅରିଜିନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତୁମର ଶିମିଳିପାଳ ଆଉ ତୁମର ମେଘସାଣୀରେ which are the dome shape and circular structure. The elevation of this mountain ranges from 600 meter to 1050 meter. These are two important peak in this region. ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଶିମିଳିପାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ମେଘସାଣୀ ଯେଉଁଠିକି ତୁମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ. So they have the volcanic origin. ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ମଳୟଗିରି ଆଉ ତମର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ mountain at of the Boitarini and the Brahmani interflows. So this group mountains peaks lies in the north south direction. North south direction ने एमती लाए करचंती. The elevation of the Molagiri तमरा माकड़नाच and the गंधमार्दन are 1170 मीटर 1092 और 1044 respectively. These are part of the eastern ghat. This region is polycyclic region. अच्छा एगुड़ा सब तमरा पार्ट होचंदी ईस्टर्न घाटर तांकर एटी सब हाईएस्ट पिक तुम कह दैट इज मलयगिरी. अच्छा तुम वाटर सेड बिटवीन दि ब्राह्मणी एंड दि महानदी. ब्राह्मणी और महानदी भितर कौन कौन सब वाटर सेड रीजन अच्छे देखीदे. दि ओरिजिन ऑफ द माउंटेन इज सिमिलर टू दोज ऑफ दि ब्राह्मणी एंड बैतरणी इंटरफ्लोस. द रीजन बिटवीन द वैलीज इज adjacent of the water course. Okay, these mountains are more distorted which is a result of continued action of the Mahanadi and Boitarani river. देखो जेम तोर कहबी गोटे जिनस बैड लैंड टोपोग्राफी कौन. व्हाट डू यू मीन बाय ए बैड लैंड टोपोग्राफी. बैड लैंड टोपोग्राफी से रीजन को कहब जोटी कि एबे रिवर आउ बहुनी बट अल्प अल्प जगार गोटे जगार तार फ्लो बंद कर सारा आस्ते आस्ते बहुत बट से जगह को काटिकी द टाइप ऑफ द थिंग्स से सेमती नाला बट ड्यू टू द रिवर द स्ट्रक्चर चेंज हो जाए द थिंग्स चेंज हो जाए तो से सब जिन को तुम कौन कह दे आर दि बैड लैंड टोपोग्राफी. ओके तो से भाया सब जिन को तुम डिस्टर्टेड हुई एज कंटिन्यूड एक्शन ऑफ द महानदी एंड ब्राह्मणी जो होती द माउंटेन इज रन इन द डायरेक्शन लाइक द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्दर्न पोर्शन एंड नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट इन दि सदर्न पोर्शन. ये सब तांकर ये अलाइंग है से सब ये इट इज कॉमन इंटरफ्लूस ऑफ द महानदी ऋषिकुल्या एंड द वंशधारा. This deeply eroded watershed extended in the north-south direction. The elevation of this region is ranges from 600 to 1000. It also has many peaks which rise above 1200 meter. That is called as the Singaraju. It is 1500 meter भी अधिका. महेंद्रगिरी तमर 1500 मीटर भी above. Devagiri 1360 meter and also peak in this region. तापर ये तुम पोटांगी अच्छी तुम चंद्रगिरी माउंटेन अच्छी पोटांगी माउंटेन चंद्रगिरी माउंटेन महेंद्रगिरी देवगिरी सिंगराजू तुम आंकर पोटांगीर हाइट हो तुम के 900 टू माने आंक सब हाइट एवरेज हाइट 900 रु 1350 भितर ही थाए. तुम साबरी बेसिन पाखे द माउंटेन तुम सेपरेट क्या तुम साबरी बेसिन एंड द नागवेली. ओके तो जिन टे मार्क करदे. अच्छा तापर द हाईएस्ट पिक ऑफ द ओडिशा इज देवमाली पिक जोटी सब लोग बुली जाती 1672 मीटर लाइज इन दिस रेंज. इट इज इन द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड ऑल द माने हाई पिक्स आर कॉल्ड एज द गालीकोंडा इन 1643 एंड द सिंकाराम इन 1620 एंड द तुरियाकोंडा ऑफ 1598. Due to the shifting of the cultivation, the hilltops are devoid of the vegetation, but farmers practice terrace cultivation in this valley. Terrace cultivation लाइफ तुम कहीपर तुम जमी सोपान पद्धति तुम चाष हुए जमी तुम ये जेहेतु माने गछ थाए बट तुम जानते जोड़ाक से तुम हिली एरिया जो एग्रीकल्चर सब हुए से पानी जमी जीवन से जिन गुड़ाक सब पचिज खासकर थिंग तुम टी जो हुए तो से जो तुम ये सोपान पद्धति जो भाया चाष हुए तुम मृत्तिका क्षय बचा सहित ये तुम पानी भी स्लो स्लो गति कर. सेंट्रल प्लाट्यू सब कौन कौन अच्छे दिस प्लाट्यूज आर लाइज ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द ईस्टर्न घाट व्हिच आर मोस्टली इरोडेड इन द फॉर्म. द एलिवेशन इज रेंजेस वेरीज बिटवीन 305 रु 610 मीटर. देख गोटे जिन तुम फिजिकल जियोग्राफी अच्छे मेसा एंड ब्यूटे
मेसा एंड ब्यूटे मीन्स द थिंग जदि गोटे पहाड़ थिला से पहाड़ जिनसर किसी जिनस इरोडेड होगी जाकि आउ गोटे जगह जमा हो जाए तो से सब जिनस को तुम कौन कह ब्यूटे आउ जो जगह तुम बंची जाए दे आर कॉल्ड एज दि रेसिडुअल हिल्स ताको तुम मेसा बोली कह तो मेसा एंड द ब्यूटे द थिंग इज दैट यू हैव मैंने तुम चाहिए कनेक्ट कर पार एंड द थिंग यही सब रेंज भितर अच्छा कारण एम प्रायतः बेसी इरोडेड होती द पैनपोस केउंझर एंड दि पलाहार प्लाटेउ ऑफ द अपर बैतरणी कैटचमेंट बेसिन the region in surrounded by the Singhbum and the Ranchi plateau in the north and the Similpal कारण तुम केउझर जो टाइम जीव से टाइम तुम से पट देखिए जीव तुम बड़बिल झारखंड से पट देखिए जीव झारखंड आसला मैंने तुम सिंहभूम डालभूम रांची से सब जिन तुम से पाइज है देन से सब तुम ये जो तुम अच्छी सेंट्रल हाईलैंड कैटचमेंट बेसिन ये तुम नॉर्थ रे सिंहभूम आउ रांची प्लाटेउ रहीगला सिमिलपाल माउंटेन तार ईस्ट रहीगला आ तुम मांकड़नाच माउंटेन तुम वेस्ट को रहीगला आ बैतरणी मेन रिवर जोटा कि ये तुम ड्रेन हो कि तुम बैतरणी रिवर ड्रेन हो तुम ये सेंट्रल प्लाटेउ जोटा तुम पैनपोस केउंझर आउ पालाहार प्लाटेउ बोली कह अपर बैतरणी गोटे कैटचमेंट तापर बैतरणी इन द मेन रिवर व्हिच ड्रेन्स द रीजन दिस इज द रीजन व्हिच गेट्स high rainfall in both during monsoon and the winter season. The Nabarangpur, Jaipur of the upper Sabri basin, the Bastar mountain lies on its western boundary, whereas the Chandragiri and Potangi mountain lies on its eastern boundary. The Savari in the mountain, the main river which drains the region along with its tributaries. Okay. तापर ये इंपोर्टाट पिक सब कौन कौन अच्छी देवमाली आम देखिले 16 सबुठ हाएस्ट पिक ये देवमाली 1672 टिके तौक अच्छे आमर सिंकारम 1620 गोलीकोंडा 1617 तो ये सबुठ जब कहीपर टॉप 3 देवमाली सिंकारम गोलीकोंडा आ सबुठ माने तापड़ू लास्ट लास्ट दी चार्टा ना ही तुम एरिकोंडा नीलमगिरी महेंद्रगिरी ये सब ना इनक्लूडेड तापर वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड तुम कहीपर दैट इज द लोअर एलिवेशन दैन दि प्लाटेउस तुम कहीपर दैट इज द 153 टू 305 जाए ही आंकर एलिवेशन ये देखा मिले से जो आपको वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड बोली कहगला द वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड्स आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर्स लाइक द राजारंगपुर पैनपोस अपलैंड्स जोटा कि तुम कोयल आउ संक रिवर राजारंगपुर पैनपोस माने अपलैंड आउ तुम झारसुगुड़ा upland of the Ib basin and the Baragad upland of the Jira and the Jhunsa basin, the Balangir, Titlagarh and the Patnagar upland of the northern Tel basin and the Biswapatna upland of the southern Tel basin, the Malkaragini upland in the Savri basin. Okay, then the river valleys and the floodplains विषय से कौन कौन अच्छी the valleys are resulted in the fluvial action of the major rivers like the average elevation of the river valleys and the floodplains are ranging from the 75 meter to 150 meters ये जो भैल्यू गुड़ाक बहुत कम कम एलिवेशन था कारण ये प्रायतः तुम रिवर भैलीज गुड़ा सब देखा जाए दिस भैलीज आर नैरो डीप एंड अपर रिच एंड स्लाइटली वाइड एट दि मिडिल पार्ट एंड बिकम वाइडेस्ट इन दि लोअर पार्ट कारण से टाइम से बुढ़ा ही जाती जानते ओल्ड स्टेज रिवर पूरा अंकी बंकी जाए से अंका अंका नई तुम कह दैट लाइक ऑफ द मेंडरिंग से तुम सो डिपोजिशन वे लाइक द पॉइंट वे डिपोजिट ऑक्सपोल एक जो तुम ऑफसो करागुती लेक बोली कह दैट द थिंग दे आर प्रेजेंट दिया इंपोर्टाट रिवर जो तुम अच्छे द भैली ऑफ द महानदी रिवर देखा भैली ऑफ द ब्राह्मणी रिवर देखा भैली ऑफ द बमसद्रा देखा ये ब्राह्मणी ये महानदी रिवर तुम कौट बार तुम कहीपर ऑरिजिन सब छत्तीसगढ़ रही छत्तीसगढ़ तुम कौ प्रकार रेडियल मैंने पैटर्न देखा दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल पैटर्न मीन्स रेडियल पैटर्न इज कॉल्ड द टाइप ऑफ द थिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ये सब जगह गोटे पॉइंट रू डोम रू देखिए चारिआडू बाहर की जाऊ टाइप ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ताको तुम कौ रेडियल पैटर्न से रेडियल पैटर्न गोटे पैट हाउस तुम महानदी रिवर जे तुम ओडिशा को फ्लो होती द वैली ऑफ द flood plain of the river valley are very fertile and most of the agricultural activities takes place in these flood plains which are made by this river and they are the map तो देखी था जिन सब कौन कौन केमती अच्छे जब तुम बैतरणी देखो ये सब देख तुम एपटे सब केतरा हिल रहा जमी सुंदरगढ़ हिल बोनाई तुम एपटे रहीगला किए वीरमित्रपुर जो हिल अच्छी तुम बर्मा हिल तुम यहाँ तुम केउंझर प्लाटेउ यहाँ तुम कनक हिल यहाँ तुम
ହୀରାକୁଦ ବେସିନ୍ ଏଇଟା ତୁମର କନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ, ଏଇଟା ତୁମର ସୋନାବେରୁ ପ୍ଲାଟେଉ, ଏଇଟା ତୁମର ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେସିନ୍, ଏଇଟା ତୁମର ବୈତରଣୀ। ଏଠି ଦେଖ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଠି ତୁମର ଏସବୁ ଏଲିଭେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେ ସବୁ ଯେତିକ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଏଲିଭେସନ୍ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଇସବୁ ଏରିଆ ହେଲା ତୁମର ହାଏଷ୍ଟ ଏଇ ଏଲିଭେସନ୍ରେ ସବୁ ଏରିଆ ଅଛି ହେଲା। ତ ତୁମେ ଯଦି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁଥିବ, ଏବେ ତୁମେ ଏଲିଭେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ତୁମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ କି ଜିନିଷ କେଉଁଠି କେମିତି ଅଛି। ତ ଡାଟା ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ say it is a topography type but not actual topography, it just तुमको देखा होची कि जिनस एलिवेशन वाइज तुम कलर होची कि जिनस कोटी कौन होची तुम देख है। तापर तुम जदि देखियो सबठू मीन सी लेवल 150 केउंझर पाटेऊ बटे बैतरणी। अच्छा देख लो। अच्छा तापर हम देखिए केते सब लेक आ पोर्ट अच्छी आम ओडिशा रे केतरा लेक आ पोर्ट अच्छी। अच्छा ओडिशा हाज मेनी न्याचुराल लेक लाइक चिलिका अंशुपार ह्रद जोटा तुम अश्व खोराकृति ह्रद बोली कह। ऑक्सबोर्ड लेक केमती एक्चुअली हुए जो टाइम तुम साइनोसिटी इंक्रीजेस हो जाए माने तुम कहीपर गोटे रिभर एवं मेंडरिंग करके जाऊँगी अंकी बंकी जाऊँगी बट वंस अपॉन ए टाइम कौन है ना ये जो पार्ट रू तार वेलोसिटी इंक्रीज हो गला तो ये तार कोर्स को भांगिकी एपटे सीधा फ्लो कला। सीधा फ्लो कर सारा पर ये जो पार्ट तार छिंडिक बाहरी जाव एंड दैट इज लुक लाइक ए घोड़ार पाद भाया से जो कहते दैट इज कॉल्ड एज दी अश्व खोराकृति ह्रद जमी अंशुपा ह्रद। सर समागर तांपरा एंड दी Udayakhanda, it is called as some natural lakes. There are several artificial lakes also like Naraj, Jobra, Hirakud, Balimela, Rengali, Mandira, तमर हदगड़ तमर पटेरु ए सब ना तुम शुणी आमर पिकनिक गला। अच्छा this there is one of the natural port like Paradip which is the deepest natural port of the Odisha. Chandbali, Gopalpur are medium sized part or while Dhamra is called as the fishing port. Okay then कितना मल्टीपल चॉइस है हम देखते हैं। Odisha is located in which part of the India? It is in eastern coast. Sorry. Then the latitudinal extension of the Odisha from is 17 degree 49 minutes to 22 degree 32 minutes. The longitudinal extension of the Odisha is from the 81 degree 27 minute to 87 degree 29 minutes. The total geographical area लक्ष्य 55 जानथिल। The length of the Odisha coast about 550 which state bound the south of the Odisha, that is Andhra Pradesh. Which state bound of the Odisha in the west, that is Chhattisgarh. The west, the coastal plain of the Odisha stretches of the eastern coast of the India from which river the northeast, that is called as the Suvarna Rekha. And which area it is called as the hexadeltic region or the gift of the Sikh rivers, that is the coastal plain. The river which from the hexadeltic region of the coastal plain of the Odisha are Subarna Rekha, Budabalanga, Baitarani, Brahmani and Rusikulya and the Mahanadi. The middle coastal plain and comprises of, that is Baitarani, Brahmani and Mahanadi rivers. The Mahanadi delta in which of the following plains, that is called as the middle plain. The south coastal plain comprises which of the following, that is called as the lacoastal plain. Which zone of the Rusikulya plain is known as the Little Sundarban, that is called as salt tract. The sub-montane tract to the west is termed as the zone of transition. Which region among the physiographic region of Odisha is marked by a number of the watersheds, that is middle mountainous and highland region. Which region among the physiographic region of Odisha is marked by a number of watershed, that is middle mountainous and highland region. Which of the following river has caught deep and narrow valleys in the middle of the mountainous and the highland regions, that is all Baitarani, Brahmani and Mahanadi, that is all of the above. Which mountain are the volcanic of origin? They are the
both Similipal and the Meksari mountain. Then which of the following middle mountain region of Odisha is a polycyclic region, that is west ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ତମର ମଳୟଗିରି and the ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, which ranges are the highest in Odisha, that is Potangi and Chandragiri mountain. The highest peak in the Odisha, that is the Deomali peak. The Deomali peak lies in which of the district, that is in Koraput. And how many central plain are there in the Odisha? There are two central plains. And which among the following landform has the least elevation? That is, of course, the western rolling uplands. Which of the physiographic part of Odisha is most suited for the agricultural activities? That is flood plains of Mahanadi. Consider the following statement about Odisha. It is the ninth large state, that is ঠিক ଅଛି, in the population, that is 11th, that is both A1 2 and 1 and 1 both are right. Consider the following about the plateaus in the Odisha. The Panpos, Keunjhar and the Palahar plateau comprises the upper Baitarani catchment, that is right. And the Nabarangpur Jaipur plateau comprises the Savri basin, that is right. Which of the following statement is true? The middle mountainous region cover about the 3/4 of the entire state of Odisha, and the coastline of Odisha is about 230 मीटर. तो ये 2 नंबरटा बोधे भूल अच्छी कहीं आंसर हाँ ओनली 1 इज राइट. 29 नंबर 28 नंबर देखिए ओनली 1 इज राइट. तापर consider the following statement. The river of the Odisha have deep valleys. The state of the Odisha is bounded by the Bay of Bengal on the south east. तांका भितर कोटा ठीक अछि? Only B, river of the Odisha have very narrow valleys. तापर लिस्ट 1 लिस्ट 2 रे किछि जिंस देछि तम कोड मैच करिवार अछि. That is zone of the transition, that is some mountainy tract of the Rusicula number A3, okay. Then it is Little Sundarban, that is salt tract along the coast, that is sea bowl the coastal plain कहती. D is called as the flood plain, that is the source of the hydroelectricity projects, and that is end. तापर हमें देखिबा climate of the Odisha.